अब्बा मुझे याद है ये कहा करते थे कि मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने मेरा बेटा और गुरबा का मुफ्त इलाज करे। और कहते मैं डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन होम्योपैथिक की अल्लाह ताला ने तौफीक दी और उसमें ये भी हुआ कि बहुत बढ़ के गुरबा का भी इलाज किया अपने। His interest in homeopathy developed with an incident in his early 20s when he used to suffer from migraine. मुझे एक सर दर्द की तकलीफ होती थी जो माइग्रेन कहलाती है, तो इसलिए फिर मैंने हज़रत मुस्लिम मौद की तरफ रुजू किया। आपके पास एक दवाई थी सैंडोल जो कलकत्ते से आया करती थी। एक दफ़ा छोटी सईदा मेरा पाक को मैंने लेटा हुआ था, काफ़ी तकलीफ़ थी, आँख खोलनी भी मुश्किल थी। तो गर्मियों की शाम थी, मैंने कहा आप अब्बाजान से जाके मेरे लिए सैंडोल ले आए। तो कुछ देर के बाद वापस आई तो उन्होंने कहा कि वो सैंडोल तो ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने फरमाया है कि मैं होम्योपैथिक दवाई देता हूँ, ये इस्तेमाल करके देख लो। उस वक्त तक मुझे कोई ख़ास यकीन नहीं था होम्योपैथी पे, तबरकन मैंने कहा ठीक है। वो दवाई मुंह में मेरे पुड़िया मुंह खोल दिया, आंखें बंद उसी तरह, और पुड़िया मुंह में डाल दी मीठी गोलियों की। और कुछ देर बातें 2-3 मिनट बातें की, कहा मैं जानने लगी हूँ कुछ फ़र्क पड़ा। तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि दर्द है ही नहीं, यानी होने और ना होने के दरमियान जो नो मैन्स लैंड है वो भी नहीं थी। तो उससे मुझे यकीन हो गया कि ये कोई जादू टोन का नहीं है, ना महज तबर्रक, बल्कि इसमें कुछ हकीकत है, कोई खुदा ताला ने निज़ाम जारी फरमाया हुआ है। फिर मैंने हज़रत मुस्लिम मौद की लाइब्रेरी से ही, वहाँ बहुत किताबें थीं, बड़ा ज़ख़ीरा था, जाकर वहाँ से तबीयत पूछने जाया करते थे हम, आमतौर पर मगरिब के बाद जाया करते थे। तो तबीयत पूछ के फिर मैं लाइब्रेरी में चला जाता था, फिर वहाँ से उठानी भी शुरू कर दी और घर ले आता था और बाद सारी रात पढ़ता रहा। तो बहुत लंबा अरसा मैंने शनासाई हासिल की है और अभी इलाज नहीं शुरू किया, बल्कि किताबों पर किताबें पढ़ी, उनको दवाओं के मिजाज को अपने जहन में उनका नक्श जमाया, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी प्रैक्टिस शुरू की। और मुझे याद है जब अब्बा ने शुरू की है होम्योपैथिक, तो हम तो बहुत छोटे छोटे थे। तो घर में एक छोटी सी अलमारी होती थी पिछले कमरे में, उधर बीमार आके बैठते थे, गाँव से मुख्तलिफ जगहों से आ रहे होते थे। और कुछ जब ज़्यादा होना शुरू हो गया था बाहर भी बैठा करते थे। फिर जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो फिर अब्बा ने ये, पहले तो पप्पी हुक्मी अभी सिंध हुआ करती थी मेरी पप्पी, उनके घर ले गए थे। फिर वहाँ भी जब नहीं संभाल सके तो फिर अपने वक्फ़े जदीद के दफ्तर में ले गए थे और उधर अब्बा करते रहते। Despite his busy schedule after becoming Khalifa, he continued to practice homeopathy. बावजूद दीगर तमाम मसरूफियात के रोज़ाना खतूत में सैकड़ों लोग, मुसलमान, गैर मुस्लिम, अहमदी, गैर अहमदी, उनके खतूत आते थे अपनी अमराज के लिए, वो इलाज मांगते थे, हुजूर की तरफ से उनको दवाइयाँ बताई जाती थी। और सफ़रों में भी हुजूर का ये तरीक़ था कि लोग आते थे, जिसको भी पता चलता कि आप होम्योपैथी के ज़रिए भी इलाज फरमाते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, ला मज़हब, हर किस्म के लोग वो आते और आपसे होम्योपैथी जो है तरीका इलाज हासिल करते और उसके नतीजे में शिफा पाते थे। He took weekly classes to teach homeopathy and made every effort to make this form of treatment common. His lectures were compiled as a book and were published under the title Homeopathy, Like Cures Like. He was a great humanitarian. Welfare of the weak and underprivileged was always very close to his heart. Under his guidance, homeopathic clinics were established, in addition to the large numbers of hospitals and schools open to serve the poor in the most needy countries of the world. He also established an organization called Humanity First. The main purpose of this organization was to alleviate human suffering. Physicians, teachers, engineers and professionals from all walks of life belonging to the community volunteered their time to help the deprived by providing basic medical and educational needs.
Special envoys were sent in war-torn and disaster-struck countries to provide urgent medical help and relief. If you believe in Creator, you must also believe in His creation. If you love the artist, you must also love his art. As such, our concept of Islam is so beautiful and so well poised that it has started attracting attention all over the world. People from the north, from the south, from the west, from the east, all over the world joining Ahmadiyyat at a greater speed, which is now turning into not a speed but acceleration. And if you go to Africa, if you go travel to Southeast Asia, small islands like Tuvalu, etc., everywhere you will find more number of people joining Ahmadiyyat and finding peace, finding a singleness of human character which is missing elsewhere. The Ahmadiyya Muslim community is a truly global community. Under the dynamic leadership of Hazrat Khalifatul Masih IV, the community continued to spread throughout the world. Right from the beginning of his Khilafat, he regularly traveled to European countries, including Germany, Holland, Belgium, France, Switzerland, Italy, Spain, Sweden, Denmark, Norway and Portugal. His visits enhanced the missionary efforts and rejuvenated these communities. In the Far East, he toured Singapore, Fiji, Australia, Japan and Sri Lanka to meet members of the community and to make an appraisal of the opportunities for further progress. He took the message of peace to the people of Africa and toured Gambia, Sierra Leone, Liberia, the Ivory Coast, Ghana and Nigeria in 1988. This highly successful tour of 6 countries spanned over 5 weeks. During his tour, he met heads of state, ministers, parliamentarians and paramount chiefs. The members of the community were overjoyed to meet the Khalifa. He breathed new life into the community, and many came into the fold of Ahmadiyyat. He continued the missionary efforts to Mauritius and East Africa, where he toured Kenya, Uganda and Tanzania. The South American countries of Suriname, Trinidad and Tobago, Guatemala and Guyana were also blessed with his visits. Community members in these countries had the opportunity of meeting with his exalted personage and benefiting from his sublime discourses. The Ahmadiyya communities all around the world hold annual conventions to bring the community together. Hazrat Khalifatul Masih IV regularly graced and addressed these conventions during his visits. Among the many countries he regularly toured, the USA and Canada were fortunate to have their annual conventions blessed with his faith-inspiring addresses. During his visits, he also inaugurated new mosques in both Canada and the USA. After Huzur's migration, he graced the annual conventions held in the United Kingdom, and due to the headquarters being moved to London, they became an international gathering. Among the other European communities, in particular, the annual conventions in Germany were frequently graced by his presence. In July 2000, Huzur visited Indonesia, the largest Muslim country in the world. During the visit, Huzur met the President of Indonesia. He also addressed the community's annual convention of Indonesia, which attracted a large crowd. All these tours by Huzur strengthened and uplifted the spirituality and created awakening among the Ahmadi masses. Through his efforts, the community grew year after year. More and more people joined the fold of Ahmadiyyat, and many new missions were established throughout the world.